is an opportunity to reset. Every sunshine begins with the new eyes. To embrace a new perspective, we are going to start our opening ceremony of the academic year 2024-25 with the theme Aghaz, which means a beginning. A beginning, a very first step towards the journey of success. A beginning, the secret of rich life, which has more beautiful endings. New beginnings open the door to fresh opportunities that may have been inaccessible to our previous circumstances. By embracing change, our opening ceremony for the session 2024-25 with the presence of prestigious personalities. We welcome our distinguished personalities, our Honorable Chief Guest, Reverend Sister Bindu, Principal of Christ the King Convent School, Sujanpur, our respected School Director, Reverend Father John George, Reverend Sister Jacqueline, the Principal of Little Flower Convent School, Gurdaspur, Reverend Sister Jyoti, Principal of Sidwan Jamita, Reverend Father Suresh, Parish Priest of St. Ludas Church, Sidwan Jamita, Reverend Father Vinod, Parish Priest of St. Clair Church, Dinanagar, Reverend Father Rocky, Parish Priest of Durandla Church, School Principal Sister Sheila, Sister Euphrasia and Sister Mary. To express our warm welcome, I would like to request Mrs. Shweta, our first class teacher of Christ the King Convent School, Dinanagar, to come forward and give bouquet to our chief guest. Along with this, I request other staff members to present flowers to the dignitaries. As we open the doors to this momentous celebration, we are graced by the presence of our distinguished individual. As for today's prestigious personalities have arrived, atmosphere is filled with joy. We are glad to commence our opening ceremony for upcoming session with true zeal and enthusiasm under the theme Aghaz. It is with great pleasure that I extend a warm welcome to our Honorable Chief Guest, Reverend Sister Bindu, Principal of Christ the King Convent School, Sujanpur, and all fathers and sisters who all are present here for our inaugural celebration. We are truly privileged to have them with us today. Dear parents, thank you for gracing this event with your presence. Your support and encouragement mean the world to us as we celebrate this special school function. The evening prayer dance symbolizes unity and nation through elegant gestures and a melodic symphony. Let us jointly engage in a transcendent dance, recognizing the splendor and variety that enhances our Sikhisya score. Allow the prayer dance to commence, resonating with the principles that unite us into a cohesive entity. In
the inception of our 66 words, immense gratitude touches our hearts as the sacrificial realm has generously bestowed upon us plentiful blessings. As we embark on the maiden celebration of CKCS inaugural day, let us invoke divine blessings. मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतर्मन उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा।
can be lit from a single candle. Happiness never decreases by sharing. If you light a lamp for someone else, it will also brighten your path. Light stands as a cornerstone of life, holding significance both in physical and spiritual realms. Physically, it unveils the vitality and beauty inherent in nature. On the spiritual plane, light becomes a source of hope, peace, truth, and love, illuminating every facet of human existence. Light not only reveals the outer world but also nurtures the soul within, fostering a profound connection with the essence of life. With such inspiring lines, once again, I am glad to address all of you for this ceremony. In the spirit of tradition, we commence these festivities with the lighting of the lamp, symbolizing the dispelling of darkness and the pursuit of enlightenment. I invite our Honorable Chief Guest, Reverend Sister Bindu, Principal of Christ the King Convent School, Sujanpur, Reverend Sister Jaslyn, Principal of Little Flower Convent School, Gurdaspur, our School Director, Reverend Father John George, Reverend Sister Jyoti, Principal of Sidhwa Jamita, our school principal, Sister Sheila, Sister Precious, Sister Geeta, to join us on stage for this auspicious ceremony. It brings me great joy to announce that as we commence our nursery class, I am delighted to invite this year's nursery representative, Rihanna Suniti, along with his class teacher, Mrs. Tanya and Mrs. Diksha, to come forward and light the lamp. I also invite Manya's grandfather, Mr. Mahinder Pal, because he is our first parent who got admission for her granddaughter in our school. Confused and cold, your candle for all to see. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Today heralds the commencement of an extraordinary day as we prepare to ignite the inaugural lamp at our school's opening ceremony of academic year 2024-25. May this lamp help us in illumination of minds, the pursuit of knowledge, and beginning of a transformative journey for students and educators coming academic year with the theme Azhar. It not just to applaud academic commencement, but also to cast a radiant glow upon the trail of knowledge and wisdom, forging a collective commitment to lifelong learning and enlightenment. And light up the sky. Pray to our Father in the name of Jesus. Darkest times, carry your candle. Run to the darkness. Seek out the candle for all to see. Take your candle.
signify the bright minds and the everlasting flame of curiosity within each one of our students. May this light guide us through the coming year, inspiring us to explore, learn, and achieve greater heights. Thank you all for illuminating our gathering with the symbolic light of lamp. May the light we kindle together inspire us all to strive for knowledge, wisdom, and unity. Once again, thank you all dignitaries and have a seat. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. With this inspirational quote, I would like to welcome on this initiation day with the theme Agaz, symbolizing new beginnings and the spirit of commencement. It promotes the idea of selflessness, empty, and putting the needs of others before one's own. Without further ado, let's dive into today's program where we showcase the incredible talents of our students. Get ready for a mesmerizing moment filled with performances, presentations with the magic of Agaz. Thank you for being a part of this joyous occasion. जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रात, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। माता पिता का आशीर्वाद हो, साथ में जब साथ में जब साथ में जब, गुरुजनों का आशीष मिले, हर बात में जब बात में जब बात में जब, बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब, करना है कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में हम, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल भरपूर दिखाई देती है, रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारों, पांच जन्म की गूंज सुनाई देती है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है।
Thank you, dear students, for the wonderful performance that filled today's program with the joy and energy. I love nature. I love tree. I love it, Basant and bee. Nature is like our mother who never scolds us. Nature is a precious gift. Vasundan Vasilatan. Mother Earth, it's a great place to be. Mother Earth, home and feel and need. Look after Earth with care, 'cause it's a planet we all share. Humans, animals, plants and trees, let's live together in harmony. Mother Earth, it's a great place to be. Mother Earth, home planet for you and me. In ourselves we must stay calm, for our future we need to strong. Behind this was one, like the world will break us long. Mother Earth, it's a great place to be. Mother Earth, home planet for you and me. It's a great place to be, in peace and harmony. टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा ये बहती सी है नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा ये बहती सी है नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा कि कुदरत की नस नस में जहर ये बस जाएगा प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं कैसा ये समाज है ना हो हाथों में आज है मौका ये अपना बनाए टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाएंगे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाएंगे प्लास्टिक वाले स्माइल सारे हो चुके आओ खुल के मुस्कुराए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए
टिक 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 क्लास टिक टिक ना पाए रे। We really enjoyed the vibrant performance of class nursery, which was the total of the blend of grace and energy. God bless you all, our teenage told. Welcome all. The parent-child relationship is one in which we see love, gratitude, and care. They contribute significantly to the growth and development. Parents are the most beautiful and valuable God-given gifts in our life. Parents play a crucial role throughout this podcast our love. VLKG class perform a dance of parent child song. माँ बाप, मम्मी पापा, मदर फादर, आई बाबा, इनके नाम है अनेक, पर इनका मतलब सिर्फ एक। हमारे जीवन का अस्तित्व जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं। हमें इस दुनिया में लाने वाले, एक अलग पहचान देने वाले, हमारी जिंदगी के सबसे पहले भगवान, जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं। चलना फिरना दौड़ना, खाना पीना, प्यार करना, जीवन की इंपॉर्टेंट सीख देने वाले हमारे सबसे पहले टीचर को हम अक्सर भूल जाते हैं। आज हम सब मिलकर आपको आपके सबसे पहले टीचर, फ्रेंड और आइडल से फिर से मिलते हैं। ये कहानी दो ऐसे शख्स की है जिन्हें हम माँ और पिता कहते हैं। जब एक रोटी के 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहने वाली व्यक्ति केवल माँ होती है। बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर है मासूम सी लोरी, तो कभी ना भूल पाऊंगा वो कहानी है पिता। मेरा सुपर हीरो ना हवा में उड़ता है, ना विलेन से लड़ता है, फिर भी मेरा सुपर हीरो
बाकी सुपर हीरो से बेस्ट है। मेरे सुपर हीरो के पास कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी वो मेरी सारी विश पूरी करता है। दुनिया मेरे सुपर हीरो को नहीं जानती, पर मेरा सुपर हीरो ही मेरी दुनिया है। agriculture, which is the source of our food, our livelihood, and our
our culture, farming is not just a profession but a way of life for millions of people in our country. Farming is also facing many challenges and problems in the present time, such as climate change, water scarcity, soil degradation, pests, diseases, and market fluctuation. These issues affect the life and incomes of cultivators, who are the backbone of our economy. So, without further ado, let's just welcome the performers with a huge round of applause. Please put your hand together for second class students. I hope you enjoy this mime dance performance on farming.
a traditional Indian dance form is not just about rhythmic beats, but beautiful expression of joy and togetherness. The beat of the dhol, the thrill of colorful skirts. Today's performance is a celebration of rich culture and nature of Gujarat. My dancing fans have poured their heart into marching vibrant moves of Dandiya. As the stage take the stage, let's show them our appreciation with a huge round of applause.
कैसे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये भर सोना सोना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। हम चलते हैं जो ऐसे तो दिल दुश्मन के थोड़ी सी दूर मेरी धरती की मेरे बदन की, थोड़ी सी खुशबू आई तेरी मस्त बदन की, थोड़ी सी धोखने वाली जिसमें हम जुनून लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, तेरे रंग जो खिला खिला ले, और मोहित रंग से बसंती यारा, मोहित रंग से बसंती, झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देश मेरे तेरी जान है तुम, देश मेरे तेरी जान है तुम, देश मेरे तेरी शान है तुम, देश मेरे तेरी शान है तुम। हे वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में चल तक निभा जाएंगे, कोई चीज़ है तेरे कदमों में हम बेटे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। मैं वतन
Today, with the students of first standard, stand before you with immense pleasure to pay tribute to the remarkable sports personality who have not only left an indelible mark on the field, but have also inspired generation with their dedication, passion, and exemplary sportsmanship. Let's reflect on the lessons they teach us the importance of hard work, teamwork, discipline, and the unyielding belief that success is earned through sweat and perseverance. Let us express our gratitude to some sport personality for gifting us moment of drum, joy, cheer, excitement. बेहतरीन प्रदर्शन के बाद नीरज से रियो ओलंपिक्स में बड़ी आशाएं And the news is just in Neeraj. Neeraj failed to go beyond the qualification mark. नीरज को नॉट क्लियर जैवलिन है नीरज होगा नहीं जा पाएंगे रियो ओलंपिक्स। क्या हुआ अब आगे क्या? जिंदगी में आगे क्या होने वाला है वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, लेकिन आज क्या करेंगे उस पे है। तो आज तैयारी करते हैं कल की जीत के लिए। लड़ जा अब बाकी कुछ मत रख, जितना भी है दम झोंक दे सब, मुट्ठी बना के दे घुमा के चट्टानों के छक्के छुड़ा दे, जितना भी है दम झोंक दे सब, किस्मत के इन तारों को दिन में तारे दिखा दे, अपने मुकद्दर का अब तू ही रब है। कौन जीतेगा? हिंदुस्तान की उम्मीद मिल्खा सिंह या पाकिस्तान की शान अब्दुल खालिक? तुम्हारे सपने में ये जो बॉक्सिंग का शब्द है ना, ये निकाल के छोड़ूंगा। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए।
बॉक्सिंग ड्रेस पहन के मोहम्मद अली। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। क्या बॉक्सर मेरी कौम को भूल गया? क्या मेरी कौम बॉक्सिंग भूल Zumba, yeah, Zumba, yeah, Zumba, yeah. Zumba, Zumba, yeah, Zumba, yeah, Zumba, yeah. Zumba, Zumba, yeah, Zumba, yeah, Zumba, yeah. Zumba, Zumba, yeah, Zumba, yeah, Zumba, yeah. Everybody dance and move it, move it. Turn up, move it, move it. Shake out your friend, move it, move it, oh. All night. Everybody dance and move it, move it. Turn up, move it, move it. Shake out your friend, move it, move it, oh. Stop, move it. Push it.
on your mark, just get ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, 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 go. Let's go! Everybody dance and move it, move it. Darling, now move it, move it. Guys and move it, move it. Everybody dance and move it, move it. Darling, now move it, move it. Guys and move it, move it. Let me see you boogie, boogie, lumba, boogie, lumba, boogie. You bala, boogie, boogie, lumba, boogie, lumba. Let me see you boogie, boogie, lumba, boogie, lumba, boogie. You bala, boogie, boogie, lumba, boogie, lumba, boogie. Dear parents, it is a request whose vehicle number 3741. I repeat, 3741 auto car. Kindly move that car from the parking side. There is a child who is sick, want to go. ਨੀ ਬੰਸੋ ਐਨੀ ਟੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਏ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਕਿੰਗ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨੀ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਨੀ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਗ ਲਾਵੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਆਜਾ ਚੱਲ ਫਿਰ कोड़ी तेरी वे मला सोनी सोनी वे जज दी काठियां दे नाल काठी डेढ़ ते हजार मैं बलहारी वे मां दे सुरजना 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 एक पिंड दिया लिपियां कंधा उच्च दरवाजे लंबियां सुनी दिया टाइयां भाई चक्को मंजा डाहो गोरसी भाई चक्को मंजा डाहो गोरसी असी दान के मेल विचों आया भाई चक्को मंजा डाहो गोरसी आंधी कुड़िए जांदी कुड़िए चक लिया बाजार विचों डोरी मेहमान ध्याना मेल आ गया विचों जज दी सेना होई मेहमान ध्याना मेल आ गया नी नानकियां दा बकरा ए जण खुचरा बोलदा के ना बे बोलदा है भाई बोलदा है नी दादकियां दी बकरी जानी खचरी बोलदी है के ना नी बोलदी है भाई बोलदी है चुटकी ने मारा राख दी मामी बादरी लवानी बड़ा हाथ विच डारू दे के नी तो खेला लवा नी बाड़ी चतुरे पगा चने विचों गिले खाती बैठा हारी कड़ी चने विचों गिले खाती बैठा हारी कड़ी चाची नगरो निकल चली मोग्या जाके पड़ी चने विचों गिले खाती बैठा हारी कड़ी चने विचों गिले खाती बैठा हारी कड़ी नी मामी ऐना कौड़ा कौड़ा का तो बोल दिया लड्डू खा लड्डू ਹਾਏ ਨੀ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਬਲਾਈ ਮਿੱਠੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਆ ਲੈ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ मामी थोड़ा थोड़ा खाई नी बवाल हो गई मामी थोड़ा थोड़ा खाई नी बवाल हो गई ऐसे बैदना होती मनी बदनाम हो गई ਲੈ ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ लड्डू खाते भी बतेरे लड्डू बंडे भी बतेरे आज रंग
ਨੀ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੀ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਚ ਲੱਚ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਨੀ ਲੱਚ ਲੱਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਚਾਚੀ ਵੇੜੇ ਨਾਨਕ ਟੱਕ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਨੀ ਆਈ ਆ ਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੀਵੀਂ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਪਾਵੇ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟੱਕੂ ਟੱਕੂ ਲੈ ਲਿਆ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਛਾਂਦੀ ਸੀ ਮਾਮੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਛਾਂਗੀ ਸੀ। ਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨੀ ਭੈਣੇ ਮਾਮਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਦੇ। ਫੇਰ ਮਾਮੀ ਨੇ ਲਾ ਦੇ 2 ਪਰੌਂਠੇ। ਨੀ ਭੈਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਕਿੱਦਾਂ 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 ਨੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਡੋਲੂ ਖੜਕਿਆ ਹੋ। ਨੀ ਭੈਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਵੱਟ ਤੂੜੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਕੀ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਵਾਸੀਏ ਹੁਣ ਘਰ ਕੀ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਵਾਸੀਏ ਹੁਣ ਘਰ ਕੀ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਵਾਸੀਏ ਹੁਣ ਘਰ ਕੀ ਹਾਏ ਫੋਟ ਨੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਭੈਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀ। ਨੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈ ਬਰਾਤ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਨੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਵਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਪਈ ਖੜਕ ਤੋਂ ਲਈ ਰੰਗ 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 ਮਗਰ ਪਈ ਤੇਰੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਟੈਣ ਜਦੋਂ ਟੱਕਰੇਗੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੱਲ ਮੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੂ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਮੱਲੀਏ ਤਾਰਾ ਜੱਟ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਰ ਮੱਲੀਏ ਤਾਰਾ ਜੱਟ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਰ ਮੱਲੀਏ ਤਾਰਾ ਜੱਟ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਰ ਮੱਲੀਏ ਪੱਕੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇ ਵੇ ਤੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਸਿਤਾਰੇ ਪੱਕੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇ ਵੇ ਤੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਸਿਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੇ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਕੀਨ ਮੁੰਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਪੱਕੀਆਂ ਦੀ ਛਣ 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 ਮਾਰਾਂ ਵੇ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਕੀਨ ਮੁੰਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਪੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਾਂ ਵੇ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਕੀਨ ਮੁੰਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਪੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਾਂ ਵੇ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਕੀਨ ਮੁੰਡਿਆ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੜਪੜ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹਾਰ ਨੀ ਛੱਡ ਕੰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਕੰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਕੰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਰ ਨੀ ਛੱਡ 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 ਕੰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਲਕ 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 ਵੇੜਾ ਮੈਂ ਵੱਲਿਆ ਮੈਂ ਵੇੜੇ ਦੀ 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 ਪਾਲਕ ਵੇੜਾ ਮੈਂ ਵੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਨਾ ਡਾਈਆਂ ਨੀ ਮੰਜੀਆਂ ਨਾ ਡਾਈਆਂ ਨੀ ਦੱਸ ਕਾਹਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਗੋਡੇ ਆਈਆਂ ਵੇ ਸ਼ਗਨ ਬਥੇਰੇ ਨੀ ਸ਼ਗਨ ਬਥੇਰੇ ਨੀ ਬੀਬੀ ਆਇਆ ਦੇ ਗੋਡੇ Welcome to our new students whose inclusion enhances our school family with the steadfast guidance of educators and the enduring back of parents. We set forth a voyage brimming with development with endless possibilities. Now, I would like to our esteemed chief guest, Reverend Sister Bindu, Principal of Christ the King Convent School, Sujanpur, our respected Director, Reverend Father John George, and Reverend Sister Jasleen, Principal of Little Flower Convent School, Gurdaspur, Sister Geeta, Sister Vinay, and Sister Sheila, Sister Euphrasia, and Sister Mari. Please commence the Vidyaram ceremony at our school. Please join us to
auspicious event. Dear sisters and our esteemed director, Reverend Father John George, I kindly requested that you take your designated seats while graciously holding a petal of flowers adorned with vermilion, placing it upon your laps in accordance with the ceremonial tradition. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी I extend a warm invitation to parents of nursery students along with their children to grace the stage of auspicious Vidyaram ceremony. Now, in proceed with a Vidyaram ceremony, Reverend Father John George and sisters holding the hand of each student, them to write first alphabet. Our beloved teachers of Christ the King Convent School symbolizes the shower of petal of flowers, invoking the blessings of God in our students. It is a very precious to start the academic journey, and we gather here to celebrate significant milestone in life of our young learners. The initiation into the world of knowledge and learning, Vidya Aram, is also known as Aksharabhyasam. It is a tradition where young children introduced to world with learning and education. Christ the King Convent School holds the ceremony to mark the initiation of the child into education, symbolizing the beginning of their journey into acquiring knowledge and wisdom. To young learners, we say embrace this opportunity with open hearts and open minds. Let your curiosity guide you and never be afraid to question. Remember, education is journey, not a destination, and every step you take will bring you closer to realizing your dreams. To parents, I extend my heartful gratitude for entrusting us with the education of your child. Your support and encouragement are invaluable in shaping their future, and we are committed to nurturing their talents and helping them to reach the full potential. सरस्वती
this event, as it's time to honor and celebrate exceptional talent of Christ the King Convent School, Dinanagar scholars who have witnessed today. As we bestow these honors upon our outstanding students, let's reflect on the words of Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Each accolade today represents a step towards positive change, a testament to the transformative power of education. Let this ceremony not only be a recognition of academic inaugural of Christ the King Convent School, Dinanagar, but a celebration of the diverse talents and skills that make our school vibrant. Each student here contribute to the rich tapestry of our educational journey. Now, I request our Honorable Chief Guest, Reverend Sister Bindu, Principal of Christ the King Convent School, Sujanpur, School Director, Reverend Father John George, and Principal Sister Sheila to grace the stage by distributing certificates to our talented learners who qualified SOF first time, which is a Science Olympiad Foundation in which students participate to showcase their talent in various ways. Christ the King Convent School, Dinanagar express gratitude that we first time allocating certificates to winners of SFA on stage. Now it's time to call our SF winners. From class first, Gitanj Sharma. He got the certificate for English and Maths. Give a round of applause everyone for the winners. Kanishka Singh from first class, English and Maths. Gopesh Chaitanya from second class for English. Krishna from first class for Maths. Sahaj Singh from second class. Sahajpal Singh from second class for English. Harsirat Kaur from third class for English. Ekam Kuntal from third class for English and Science. Give big hands for the students, dear parents, dear gathering, please give big hands. Dhruv Sharma from third class for Science, English and Maths. Rudraveed from third class for English and Maths. Viras Suri from third class for Science, Maths and English. Bhavesh Karlupia from third class for Science and Maths. Mehul Mahajan from third class for Science.
Sanvi Sohal from 3rd class for Science and Maths. Tanisha Slaria from 3rd class for Science. Mankirat Singh from 2nd class for Maths. गुड़िया 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 देखो बच्चा, सामने देखना बच्चा। हाँ, ओके। हाँ, जस। Ryan Kashyap from 2nd class for Maths. छोड़ू, हेलो। बच्चा, हेलो। इधर देखना बच्चा, सामने। हाँ, जस। ओके। Harmanjot Saini from 3rd class for Maths. Harnoor Singh from 3rd class for Maths. Krishna from 2nd class for Maths. साहिल, रोक नहीं है तो मैं बोलूँगा। छोड़ू, हेलो। RF Slaria from 1st class for Maths. Raina Thakur from 1st class for Maths. Rashneet Kaur from 1st class for Maths. Manya from 1st class for Maths. Kavya from 1st class for Maths. Kanish Sharangal from 1st class for Maths. Asita from 1st class for Maths. Divyanshu from 1st class for Maths. दिवांशु इधर देखना बच्चा। Arab Kumar from 1st class for Maths. हाँ पर यस Krishna from 1st class for Maths. Congratulations to all the recipients and the parents. May this moment serve as a source of inspiration for all us as we embark on the another year of learning and growth. Reverend Sister Bindu, Principal of Christ the King Convent School, Sujanpur, to speak and share us with her insights. Reverend Father John George, the Director, Reverend Sister Sheila, Principal, Reverend Sisters, dear teachers, parents, benefactors and loving students, greetings of the day. New Year is not about changing the dates, but direction. It's not about changing the calendar, but commitment. It's not about changing the actions, but attitude. As we embark on a new academic year, let us welcome the new year wholeheartedly with loads of dreams and aspirations. New year itself brings newness into our lives. It gives us the courage to dream big. It is not the year that starts, it's a time that starts with a new set of goals. A new year always accompanies us
in the sense of renewal, a renewal of purpose and collective commitment to excellence in teaching and learning. We opened the book, its pages are blank. We are going to sew words on them ourselves. New Year brings in a lot of resolutions. This resolution could be in any area such as study, discipline, extracurricular activities, helping others, being punctual, or even being a better son or a daughter to our parents. It should be aimed at how I can be better myself in this new academic year. It also must be specific and achievable. It must be in pursuit with myself to improve my older self. Once the year ends, you can recall with joy the effort you have put in and the achievement you have had. So, dear teachers and students, let us make each day of the year most unforgettable and fill up the entire year with whatever our heart desires. Just like birds, let's all leave behind the uncertainties, grudges, sadness, pain, fear, and regrets. Let us wish that new year brings us contentment, success, and fill the year with peace, hope, and togetherness of our family and friends. At this beautiful occasion of ceremonial opening of the new academic year, I would like to appreciate and congratulate the admirable efforts of the entire school management of Christ the King Convent School, Dinanagar, the associate institution of Christ the King Convent School, Sujanpur, in striving towards excellence. And I can see the rapid growth and development of this temple of learning in both infrastructure as well as quality of education it offers. A warm applause to the director of the school, Reverend Father John George, and the principal, Sister Sheila, who are the beacons and aviators of this remarkable mission. I pray and wish God's blessings upon them and on all their future endeavors. I also would like to congratulate all the sisters, teachers, and the entire supportive staff. Without them, this ship of knowledge cannot move smoothly. May God bless all your efforts. And it is you, dear parents, who placed trust on the school management and the teachers that they will take care of your children. Congratulations to you too for admitting your ward in this prestigious institution. Go ahead with all your dreams and work as a team so that your children will build themselves and the society on the basis of moral, ethical, and divine values. And you loving students, I congratulate all of you, especially for today's wonderful performance you have done on the stage and for all your highly appreciable contributions, and wish you all the success and God's blessings in this new academic year. May you be a better student or a better son or daughter and thus a better citizen of India. Just as a new blooms spreads fragrance and freshness around, may the new year add a new beauty and freshness into your life. Happiness keeps you sweet. Trials make you strong. Sorrows make you humble. Success keep you glowing, and God keeps you going. Wishing you all a fabulous academic year with full of great achievements and more of experiences. Have a fruitful beginning, and God bless us all. Thank you.
Thank you, Reverend Sister Bindu. Now, due to some inconvenience, we would like to honor our Kirsita to give certificate. I would like to request Reverend Sister Bindu to give her certificate. After this, I would like to request our Father John George to join us on the stage to facilitate our Chief Guest of the Day, Reverend Sister Bindu, Principal of Christ the King Convent School, Sujanpur. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Your journey exemplifies this resilience and determination, inspiring us to strive for greatness. Thank you, Reverend Sister Bindu, for your valuable words. With this, I would like to request our Reverend Father John George, our school director, to share his valuable words with us. Very Reverend Sister Bindu, the chief guest of today's function, the principal of Christ the King Senior Secondary School, Sujanpur, Reverend Sister Jaslyn, the principal of Little Flower Senior Secondary School, Gurdaspur, Reverend Sister Jyoti, the principal of Our Lady of Lourdes Sumada Convent Schools, Duanjamita, Reverend Sister Sheila De Silva, the principal of Christ the King Convent School, Dinanagar, Reverend Fathers, Reverend Sisters, all my colleagues, both teaching and non-teaching, all dear parents and students. Good afternoon to all of you. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, just to express my sincere thanks, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦਾ ਫੇਮਸ president of South Africa, that is education is the most powerful weapon which you can use to change the world. ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਿੰਗ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਿੰਗ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ
कि सारी टीम का भी असी इस वेले अप्रीशिएट करना जो इन्होंने दिन रात मेहनत करते हैं। सो इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग and for your encouragement and for everything. Very special thanks to Sister Bindu, our Chief Guest of the day. Thank you so much and may God bless. खुदा परमात्मा सानू सारियां नू चढ़दी कलां दे विच रखे। थैंक यू। Today's esteemed guest and cherished member of our school community. As we gracefully conclude this enchanting day, on the behalf of Christ the King Convent School, Dinanagar, I extend my heartfelt gratitude to each one of you who made our inaugural ceremony Aghaaz truly spectacular. First and foremost, a warm thank you to you, Honorable Icon Reverend Sister Bindu, Principal of Christ the King Convent School, Sujanpur, for gracing this occasion with your presence. Your support and enthusiasm has bestowed immeasurable value upon our inaugural event, transforming it into an unforgettable experience. We extend our profound gratitude to our esteemed school director, Reverend Father John George, and school principal, Sister Sheila, for their visionary leadership and tireless efforts in nurturing our school. Your guidance and commitment have shaped countless lives and laid with foundation for excellence. Dear students, thank you for showcasing your exceptional skills and making the day truly memorable. Your dedication and performances have added special sparkle to our gathering. Keep shining and thank you for being heart and soul of our today's festivities. Thank you for sharing your exceptional talents and passions with us. Your creativity has not only illuminated our school spirit but also left an indelible mark as a testament of a thriving talent within our school. Last but certainly not the least, I would like to thank you all the parents and the guardians whose unwavering support consistently encourages our students to shine brightly. Your involvement and encouragement play a pivotal role in shaping the ongoing success of our school. As we fondly reflect on this memorable day, let us carry forward the spirit of unity and collaboration that bind us together. Once again, I extend my sincere gratitude to all of you. In the words of William Arthur Ward, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a gift and not giving. Your presence and contribution have been the greatest gift. Here's too many more joyous moments in our journey together. Once again, a big thanks to all of you. नहीं तारे तोड़न दी गल कर दे ओही कहिए जो करना जान दे सानू आउंदी है समय दी नब्ज फरनी रंग महफिल च भरना जान दे जद भी जोश जवानी ने छल मारी ओ साडा चादरे सवाउण नू जी करिया सब खुंडे ते काटवां नू तेल ला के ओ धुप वांग लिशकाउण नू जी करिया ओ साडे ढोल नू सारा ही जग जाने भर भर खड़काउण नू जी करिया ओए असीं किवें आ भंगड़े ते राज करदे अज फेर दिखाउण नू जी करिया दिलां विच इहो जिहे जज्बे ते बुलियां ते मिठी मिठी मुस्कान लैके पंजाब दे मशहूर गबरू पेश करन जा रहे हैं पंजाब दा जग प्रसिद्ध लोक नाच भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा